Finally. See. शला दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML को, जिसमें लेवल 1 से लेकर यानी बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल प्रो लेवल तक हम पूरे HTML को पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल भी कोडिंग प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट नहीं आती है, तो इस वीडियो के अंदर आप वो चीजें सीख जाएंगे। कोड कैसे करना होता है HTML की वेब डेवलपमेंट में। कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आपके लिए एक शॉर्ट करियर ऑप्शन है जो आपको डायरेक्टली 12 लाख तक की जॉब दिला सकता है, और वो भी एज अ फ्रेशर। एंड नॉट ओनली दिस, यू कैन अभी के लिए हमें समझना है व्यू पेज सबसे बड़ी है, उसके बाद हेडिंग 2 है, उसके बाद हेडिंग 3 है, एंड इस तरीके से कम इंपॉर्टेंस होती जा रही है हेडिंग्स की। अब एक गलती जो काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं कि जब भी उन्हें बड़ा टेक्स्ट चाहिए होता है तो क्या करेंगे, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 का इस्तेमाल कर लेंगे। जब भी छोटा टेक्स्ट चाहिए होता है साइज में छोटा, तो हेडिंग 6 या हेडिंग 5 का इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम साइज डिफाइन कर सकते हैं, हम फॉन्ट साइज बता सकते हैं अपने टेक्स्ट का, पर हेडिंग्स को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हमें यूज करना चाहिए, कभी भी साइज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इसका फर्क एक्चुअली SEO पर पड़ता है। जब भी हम वेबसाइट्स को बना रहे होते हैं तो उसके अंदर रैंक जो होती है, कौन से वेब पेजेस गूगल जो ऊपर दिखाएगा कौन से नीचे दिखाएगा, उसमें वो सर्च करता है कि ये जो वेबसाइट है, ये जो वेब पेज है, इसकी मेन हेडिंग क्या है, इसका टॉपिक क्या है। तो अगर हम सिर्फ साइज के लिए जो मेन टॉपिक नहीं है उसको भी बड़ी हेडिंग दे देंगे कि बस बड़ा उसको डिस्प्ले कराना है, इसलिए बस ऊपर डाल दिया, और वो मेन टॉपिक भी नहीं है, तो क्या करेगा, गूगल को लगेगा कि आपका मेन टॉपिक यही है, तो वो रैंकिंग आपकी जो है अफेक्ट करा सकता है। तो वो नहीं करना, हेडिंग्स को यूज करना है हमेशा इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बड़ी वाली हेडिंग दे, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको छोटी वाली हेडिंग। तो साइज के लिए फॉन्ट साइज करके एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, जिसको यूज करते हैं टेक्स्ट का साइज डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। अब पैराग्राफ टैग का काम होता है टू ऐड पैराग्राफ्स इन HTML। जैसे हमने ऑलरेडी एक पैराग्राफ टैग लिखा हुआ था, एक और लिख लेते हैं P। Welcome to the complete HTML and CSS course. In this course, we're going to learn how to build websites from a beginner to a professional level. And by the end of this course, we're going to build YouTube.com. Now, you don't need any previous coding or technical experience. This course is designed to be your first step to becoming a software engineer. We're going to start from the very basics of HTML and CSS and build our way up step by step. And along the way, we're going to learn all the major skills that we need to create websites at a professional level. You can find the different sections of this course below the video, here and here. And after each section, I'm going to give you a bunch of exercises that you can do on your own to practice the skills that we learned. In total, this course is going to have more than 100 exercises. Lastly, you don't have to worry about taking notes. I created an HTML and CSS reference that will list everything that we learned in this course. With that said, let's get started. I'm going to be doing this course on a Mac, but everything is the same for a Windows computer. Before we begin, we're going to need two pieces of software, a web browser and a code editor. A web browser lets us view websites on the internet. It's also going to let us view the website that we create in this course. The most popular web browser for web development is Google Chrome. A code editor helps us write our HTML and CSS code. The most popular code editor for web development is called VS Code, or Visual Studio Code. To install both of these, we can go to google.com and then search for Google Chrome or for VS Code. And then open the first result and follow the instructions to download and install. Once we have those two installed, we can start the course. We'll begin by learning what is HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. You don't have to worry about what that means. Just know that it's a tool that we use to create websites. Every website from YouTube to Google to Amazon
uses a combination of HTML and CSS to create everything that we see on the website. The easiest way to understand what HTML is that we're simply giving instructions to a computer. We're telling the computer what to do step by step. The computer will then follow our instructions to create our website. So I find the best way to learn HTML is to jump in and give it a try. So we're going to create our first HTML file and our first website. Let's go to our computer and we're going to create a new folder. So this folder is going to contain all the code for this course. I'm going to call this HTML-CSS-course. Next, we're going to open this folder in our code editor. So I'm going to open VS Code. And then I'm going to click File, Open. I'm going to find the folder that we just created, which is this one. Now, once that's open, you should see the folder name at the top here and on the side here. Now let's create our first HTML file. We're going to click this icon to create a new file. And we're going to call this file website.html. So we have to make sure that this file ends with .html. This tells the computer that this file contains HTML code rather than just text. So as I mentioned, HTML is basically some instructions you give to the computer. We're going to learn our first instruction, which is less than, button, greater than. And we also need to type less than / button greater than, but our code editor might autocomplete this for us. So this is an instruction to create a button. And inside the button, we're going to have the text, hello. Now let's save our file, and we're going to learn how to open this in our web browser. To open our new website, we're going to go to the folder that contains our code, find our HTML file, we're going to right-click, open with Google Chrome. And now you can see that we have our first website that has a button with the text hello in it. And inside the button, we're going to have the text hello. Now let's save our file, and we're going to learn how to open this in our web browser. To open our new website, we're going to go to the folder that contains our code. We're going to find our HTML file. We're going to right-click,